Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 8. We are learning Unit 3. Its title is Festivals Around the World. और हमारा आज का एसेलो है Discuss their own and others' reading, taking account of others' views of what they have read, express informed opinions, justify the viewpoint, and make recommendations and develop an interest in a variety of texts. So बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, जो भी हम रीडिंग करेंगे उसमें हम अपना योर ओन एंड अदर्स रीडिंग को हमने आपस में डिस्कस करना है और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू अब उसके बारे में हम बताएंगे. एक्सप्रेस्ड इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, यानी वहाँ से जो आपको बेटा इन्फॉर्म्ड ओपिनियन क्या होता है कि जब आप कुछ रीडिंग करते हैं उससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे आपका एक ओपिनियन डेवलप होता है. सो वी विल शेयर, विल एक्सप्रेस दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट दिस टेक्स्ट, ऑलराइट. और फिर हम उसको जस्टिफाई भी करेंगे. और जस्टिफाई करने का क्या तरीका होता है, आप टेक्स्ट का रेफरेंस दे दें कि दिस इज़ हियर इट्स रिटन, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग लाइक दैट. उसको हम अपने टेक्स्ट के साथ लिंक करते हुए अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करेंगे. और फिर हम रिकमेंडेशन, यानी हमारे पास जो भी कि इसमें ये भी हो सकता है, आई थिंक ये एक एक्स्ट्रा चीज़ भी इसमें हम मेंशन कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ वी मेंशन आवर रिकमेंडेशंस, और ये हम डिफरेंट टेक्स्ट के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे. दिस इज़ व्हाट आवर SLO इज सजेस्टिंग अस. और बिफोर दिस इन योर ग्रेड 7 आपने डिस्कस हाउ रीडर्स मेक चॉइसेस अबाउट द टेक्स्ट दे लाइक रीडिंग, for example by author or genre, to develop new learning with a variety of texts. यानी इस तरह की हम लर्निंग एक ग्रेड 7 में ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम उससे एक स्टेप आगे सीखने जा रहे हैं इंशाल्लाह. So let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in Quran Surah Toha verse 114, 114, exalted is Allah, the true King. Do not rush to recite a revelation of the Quran or Prophet sallallahu alaihi wasallam before it is properly conveyed to you, and pray, my Lord, increase me in knowledge. Yes, my dear students, बेटा ये खूबसूरत आयत हमें क्या सिखा रही है. ऐसे ही टेल गो एवरी टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान से हर चीज़ सीख सकते हैं. तो बेटा यहाँ पर ये इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सीखने का एक तरीका बता रहे हैं. सबसे पहले तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हैं और उनके बाद हम सब मुखातिब हैं. और अल्लाह ताला उनको क्या कह रहे हैं कि आप कुरान को जब वही नाजिल होती है तो उसको रिसाइट करने की जल्दी ना करें. तो इससे हमें कुरान पाक की रिसाइट का एक रूल भी पता चल रहा है कि हमें जल्दी जल्दी से कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उसको ठहर ठहर कर हर लफ्ज़ को पूरा अदा करने के बाद अगला लफ्ज़ हमें पढ़ना चाहिए, राइट. तो ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाया. और ये हम सब के लिए मैसेज है कि एक तो जब हम कुरान पढ़ें उसको ठहर ठहर कर आराम आराम से पढ़ें. और इसके साथ अगली बात क्या है, सुभान अल्लाह, रब्बी ज़िदनी इल्मा. पढ़ते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे प्यारे नबी को कह रहे हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप दुआ मांगें कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा करे. तो बेटा इल्म में इजाफ़ा हम सबको चाहिए और अल्लाह ताला ही हमें बता रहे हैं कि इल्म में इजाफ़ा के लिए क्योंकि जब आप किसी चीज़ को आराम आराम से पढ़ते हो तो आप उसको अच्छा एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उसको अंडरस्टैंड. तो रीडिंग फॉर रीडिंग नहीं होती किसी भी चीज़ की, बस ऐसे गो थ्रू. और कुरान की तो बिल्कुल भी नहीं. बेटा आप लोग माशाल्लाह अब आप बड़े हैं, आप कोशिश करें छोटे छोटे अल्फाज जो अरबिक है, क्योंकि अरबी हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो छोटे छोटे अल्फाज का तर्जुमा याद करें ताकि जब आप कुरान में उसको पढ़ें तो आप इसका कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड कर सकें, राइट. और जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कुरान हमारा प्रैक्टिकल हमें सिखाता है. ये जो हम कुरान के ऊपर अप्लाई करें ये हम हर रीडिंग पर अप्लाई करते हैं कि हम उसको आराम से पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें, राइट. इंशाल्लाह टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फर्दर अबाउट इट. सो हियर वी गो. इट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी. हमने यूनिट 2 पढ़ा है, वो क्या है, सोशल मीडिया टुडे. बहुत अच्छा टॉपिक था, आप लोगों ने बहुत उसको एंजॉय किया. नाउ एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट इट. और वंस अगैन आप हमने क्या करना है, आपका जो भी दिस इज यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, राइट, क्योंकि आपने टेक्स्ट पढ़ लिया है. उस टेक्स्ट के साथ आप अपना
ओपिनियन बताएंगे और फिर उसको जस्टिफाई भी करेंगे, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस एक्टिविटी एंड देन कम बैक। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड हम कैसे इन्फॉर्म्ड ओपिनियन यानी टेक्स्ट से जो हमारा ओपिनियन डेवलप हुआ और उसको हमने जस्टिफाई किया। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू, दिस इज हाउ आप सबने, यू सी, आप सबने एक ही टेक्स्ट के ऊपर अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। दिस इज व्हाट के रीडिंग से आपका और दूसरों का जो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो चुका है उसको आप डिस्कस करें, और उसका क्या फ़ायदा है कि हम एक दूसरे से म्यूचुअल लर्निंग लेते हैं, हम एक दूसरे से भी सीखते हैं, और इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। इट एक्सपैंड्स आवर नॉलेज, इट एनहांसेस रिसर्च एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, और हमें फैसिलिटेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, राइट, एंड इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एबिलिटी। देखा अभी आपने जब डिस्कस किया तो आपको कितना, मतलब एक हमारा ओपिनियन होता है, मतलब इनरली इन आवर ब्रेन वी कीप ऑन थिंकिंग, बट व्हेन वी स्पीक तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल उससे इम्प्रूव होती है। फॉस्टर अवेयरनेस एंड ग्रांट्स एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और फिर एंगेजिंग विद सच टेक्स्ट एनरिचेस आवर ओवरऑल इंटेलेक्ट, राइट। इसलिए बेटा हम वैरायटी ऑफ टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसको हमें आपस में डिस्कस करना चाहिए। So let's start reading. Yesterday we read a part of this text. Once again, why are festivals celebrated and what is the special thing about the festival? कल हमने जब इसको इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था तो ये हमारा पर्सनल ओपिनियन था। आज आप इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। कल जो टेक्स्ट पढ़ा उसको जहन में रखते हुए इन्फॉर्म्ड ओपिनियन आप अपना बताइए। सो पॉज द वीडियो, आंसर दिस क्वेश्चंस एंड देन कम बैक। Yes, my dear students, I hope you have answered well. Now it's time to continue reading on page number 23, Dragon Boat Festival. So first I'm going to read it. Listen carefully. Dragon Boat Festival. It is the most interesting festival in Malaysia. The Penang International Dragon Boat Festival is an annual event held at the Telok Bahang Dam near Georgetown. It is exciting to see over 40 competitors from Malaysia and across the world participating in the race. At the festival, visitors can witness multicolored boats, the sound of drums, excitement, racing, and tradition. And what is tradition? A way of thinking, behavior, or doing something for a long time. जब आप बहुत अरसे तक कोई एक ही चीज़ को करते रहते हैं, it becomes a tradition. The major attraction in the huge war canoe with a dragon head. So what is a canoe? Do you know about canoe? Pause the video, answer this question to your teacher and then come back. Yes, my dear students, the canoe is a light, narrow boat with pointed ends and no keel. This is what a canoe is. You can see pointed ends and it's usually lightweight. और आपकी बुक में भी ये कनू दिखाई गई है. What's special in it? इसका एक एंड जो है वो एक ड्रैगन फेस बना होता है, राइट, क्योंकि उसको उन्होंने अपना ट्रेडिशनल वे में एक कनू बनाई है, राइट. सो दिस कनू वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें होता क्या है, अ ड्रमर सिट्स इन द मिडल ऑफ द बोट एंड कीप्स द रिदम ऑफ द paddling to an action of moving the pedals, the way we do paddling in our cycles. इसी तरह जो बोट को चलाने के लिए पैडलिंग की जाती है. Visitors can take pictures, taste local dishes and enjoy the performances. The next one is Lok Mela. Pakistan also celebrates various festivals that are religious, cultural and traditional. One of the most famous and celebrated festivals in Pakistan is Lok Mela. It is a 10-day festival held to commemorate and entertain the citizens of the twin cities of Islamabad and Rawalpindi. The annual Lok Mela is a special opportunity to witness the warmth, and what is warmth? Pleasantness, affectionate, and color of various cultures from all over Pakistan. Alhamdulillah beta, हमें पता है Pakistan is
rich with culture, तो उस culture को इस लोक मेला में represent किया जाता है. There are different stalls for food, courts, arts and crafts, folk music and theatre. A kids corner, shopping stalls and other programs that showcase the depiction of all provinces of Pakistan. So this is how this Lok Mela is arranged. Now it's time for you to complete the reading, and after this we are going to do this activity. And what this activity is, teacher will divide class in 4 groups or assigning one festival to each group. Teacher, हमने भी 4 festivals के बारे में पढ़ा है. हर ग्रुप को एक फेस्टिवल आप असाइन कीजिए. Each group will express and justify the viewpoint and make recommendation. एक तो आपने अपना, because now it's informed opinion, so you will express justified from the text, और फिर आप बताइए इसमें और क्या चीज़ें आपको, what are your recommendation, how we can do it better, what are the things you think can be included in this festival. Okay, so pause the video, enjoy this activity and then come back. Yes, my dear students, I hope you participated well. Now it's time for your another activity, because बेटा हमने इसमें variety of text हमारे SLO में है, तो मैं I brought another idea for you. Teacher will take students to the school library. Teacher, I request you, if you have a library, बच्चों को library में लेके जाइए. Every student will take a book of his or her own choice and they will read it by the weekend, and on coming Monday they will share their informed opinion about the book. इस तरह से आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी बुक्स के बारे में ओपिनियन, so students will be enriched with different text types, and they will express their own opinion. All right, this is another activity for this weekend. So it's time for our classroom activity. Answer these questions, write the answers in your notebook, and also complete these MCQs in your book. Pause the video, complete this task, and then come back. Yes, my dear children, are you done with it? All right, so it's time for your homework. You will select one cultural festival and write a paragraph to express and justify your viewpoint about it. This is your homework, and here is a worksheet. My dear fellow teachers, this worksheet is available. Kindly take a print and provide it to the students for reading. And students, definitely after reading, you are going to share your point of view about this. This is very interesting text. I hope you're going to like it. All right. So in this way, we have learned how to discuss their own and others' reading, taking account of others' view and what they have read, express informed opinion, justify the viewpoint, and make recommendation and develop an interest in a variety of texts. Are we done with it? Yes. So that's it for today. Tomorrow I'll come again. Till that time, keep learning, keep practicing. Thank you and Allah Hafiz.